हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। वेलकम टू एग्जाम सर। आज स्टार्ट करवा ओडिशा एग्जाम हाईकोर्ट एस 2024 प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर रो इंग्लिश सेक्शन। ठीक अच्छे, डायरेक्ट क्वेश्चन को जीवा। प्रथम क्वेश्चन अच्छी पासिव एक्टिव वॉइस करिया पे। ठीक अच्छे, क्वेश्चन अच्छे सी मेक्स केक्स एवरी संडे। तो कौन आंसर हम? केक्स आर मेड, सिंपल प्रेजेंट अच्छी, तो केक्स आर मेड बाय हर एवरी संडे। ठीक अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट नॉट टू ईट राइस। सिंपल पास्ट अच्छी, द पेशेंट वाज एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर नॉट टू ईट राइस। द पेशेंट वाज एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर, वाज बीइंग हबनी, हैज बीन भी हबनी, वाज एडवाइज्ड बाय डॉक्टर दैट ही शुड नॉट ईट भी हबनी। आंसर विल बी द पेशेंट वाज एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर नॉट टू ईट rice. Next question jiba, the boy said who dare call you a thief. तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट अच्छी, इनडायरेक्ट रहले the boy inquired who dared call him a thief. The boy asked who called him a thief. The boy told that who dared call him a thief. The boy wondered भी होगा नहीं, आंसर will be the boy inquired who dared call him a thief. Next question, please don't go away, she said. The answer will be she begged me not to go away. She begged that I not go away. She begged me not to go away will be the answer. Next question जीवा, एटा पैराग्राफ अच्छी, पैराग्राफ पढ़ी दियंतु पॉज करिकी। Climate change is one of the most pressing environmental issues of our time. It refers to long term पॉज करी समस्त पढ़ दियंतु। नेक्स्ट डायरेक्ट क्वेश्चन बुझिया। क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन गोल ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट रो मेन गोल कौन थिला? जे पैसेज न भी पढ़िथिबे, जीएस रो नॉलेज थिबो से भी कहि देबे। से आंसर विल बी ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस कमेबारे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज रो कॉन्सिक्वेंस कौन मेंशन है? सी लेवल, एक्सट्रीम वेदर, मेल्टिंग ग्लेशियर मेंशन अछि, केवल एटा इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव उपटे मेंशन है ही नहीं। व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज एज पर द पैसेज। प्राइमरी कॉज कौन? ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। व्हाट अप्रोच डज द पैसेज सजेस्ट इज क्रुशियल टू फाइट क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज पई सजेस्ट कौन करछि पैसेज रे? जे इंटरनेशनल कोऑपरेशन ठीक रखिया पई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फिनोमेनन ऑफ अर्थ सरफेस ग्रेजुअली वार्मिंग, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, एंटोनिम पचार छी, वी हैव ट्राइड टू assuage द फीलिंग्स ऑफ आवर रिट्रेंच्ड एम्प्लॉइज। assuage माने काम डाउन करिवा, तार अपोजिट कोन हो? एक्सक्लेट करिया, बढ़ेवा इशू को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। चेज रेनबोज मींस टू परस्यू अनरियलिस्टिक गोल्स, मृग तृष्णा टाइप। आई डोंट नो डैश शी विल डू इट और नॉट टू, fill in the blank. Answer will be I don't know whether she will do it or not. To एटी एक्स्ट्रा लगी। Which of the following words is plural? Plural कोटा हो? Index singular, analysis is singular, crisis singular. Answer will be criteria. तरफ singular हो criterion. Next question जीवा, the battalion operating from the mountain was able to dash 3 enemy divisions. Answer will be tie down. Next question, when I heard unusual sounds, I calmly walked through the house and searched each room very carefully. I calmly through careful अच्छी, very carefully होगा, through भी होगा, calmly होगा। तो आंसर भी ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, the policy of extending a country's empire and influence। कंट्री रो एम्पायर और इन्फ्लुएंस को कौन कहते हैं? इंपेरियलिज्म हो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि, वन हु पोजेसेस मेनी टैलेंट्स, वर्सटाइल, या वगैरह सब प्रकार टैलेंट अछि। दे आर टॉकिंग डैश ए कॉन्फिडेंशियल मैटर सो डू नॉट इंटरप्ट। टॉकिंग ओवर ए कॉन्फिडेंशियल मैटर, डोंट इंटरप्ट। चूज द वन व्हिच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड। लिस्ट ऑफ इश्यूज टू बी डिस्कस्ड एट ए मीटिंग, तो कौन कहते? एजेंडा। आज रो एजेंडा कौन मीटिंग रो? He said to them, don't make a noise. He asked them, right? Indirect speech रे बराबर. He asked them
not to make a noise. Next question, closest meaning, redundancy रो closest meaning होगा कौन? Excess. Next question जीवा, she expected that her son may return. Answer will be may. She intended to go in her teaching profession. She intended to go. Para jumbled अछि. When a satellite is launched, the rocket begins by going slowly upwards through the air. तो तापर लाइन कौन हो परियो? ताकू काहे को रिलेट करछि? As the rocket goes higher, it travels faster. However, the higher it goes, the less air it meets. तो Q पर P आसीबो. Then for the atmosphere become thinner. As a result, there is less friction. तो मतलब QS PR. I'm sorry. First आसिला as the rocket QP पर आसीबो R और S. For the atmosphere become thinner. As a result, there is less friction. QPRS. ठीक है. Next question here. Pick the right meaning of the idiom. Pull your socks up. Pull your socks means to improve. Pull your socks up. Next question here. His talk used to full of wit and humors. He liked reading. He was dash reader and would pore over books. He has a wide range of interest as he got them. He had standing order to books of city. The most appropriate from the option, that is option 3. A wide range of interests as soon as he got them. As soon he got them. Answer will be option C. Choose the most appropriate word from the option given the blank place 1. He was a dash reader. He liked reading. He was a dash reader. Enthusiastic, anxious, fervent, voracious. Satisfy है पहले ना, बहुत पढ़े. Choose the most appropriate word from the option given below in place 5. Standing order two books of dash city. 2 books of within inside in city. In city लो, inside city नहीं, in city हो, in city better. Next question. Choose the most appropriate word from the option given the blank space 2. He was a dash reader and would pore over books. Dash a wide range of interest. Dash a covering a wide range of interest. The answer will be covering. Choose the more appropriate word from the given in the blank 4. Offered, proclaim, intimated, given. 4. He had dashed the standing order to 2 books of. He had given a standing order. The answer will be given. Find the part of the sentence that has error in it. The doctor referred the patient for the OPD. Referred to OPD. तो part B रे error अछि, option B. ठीक है. Next question जीवा. She never visits any zoo because she is strong opponent of the idea of setting the animal free into forest, watching the animals in the natural state of going out of the house on a holiday, holding the animals in captivity for our joy. आम खुशी पाई जीव जंतु मान को रखा चापिकी. Select the correct active form of the given sentence. Every passing vehicle was being thoroughly checked. Past progressive अच्छी तो guards were thoroughly checking. एटा ही गोटे ही ऑप्शन अच्छी. Next question. Para jumbled अच्छी. I had an advertisement that said posh air conditioned fully furnished rooms are available for gentlemen of taste. PSRQ. B. Option B will be PSRQ. Next question. If I were you, I would consider the job offer seriously. I would. Next question. Find the correct spelling. Double L double N. Double L double N. Option A. Millennium. Next question.
Find the part of the sentence that has an error. If you listen with the question carefully, listen with ଲାଗିବନି or ଲାଗୁଛି ନା ଏଟା part A. My cricket coach advised me to put in a lot more effort. Performance, achievement, skill, performance. The effort. Answer will be option A. Next question. Walking at 3 o'clock, I heard the rumble of thunder. Answer will be rumble. The last question, correct alternative. He is the richest man of this place. He is richer than any man, no man, any other man of this place, than of any other man of this place. So end hochi. Thank you. All the best.